Hello and welcome to my academy. Students, our today's topic is the fundamental unit of life. As you already know, this is a very important topic. You can say this is the important chapter also, which carries 9 marks. Now, let us get started. Cell is the structural and functional unit of life. Okay? जो सेल होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. व्हाट डज दिस मीन? For example, just like the house is made up of the bricks, similarly, the body of living organisms, the body of living creatures is made up of small components called as cells. If we see the historical background, अगर हम historical background of the cell के बारे में जानेंगे तो the first cell it was discovered by the Robert Hooke in 1665. किसने ये डिस्कवर की थी? पहले रॉबर्ट हुक ने की थी ये डिस्कवर इन 1665 फ्रॉम कॉर्क ऑफ ए प्लांट. ओके, फ्रॉम कॉर्क ऑफ ए प्लांट. तो जस्ट लाइक द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. नाउ वी हैव द ऑर्गेनिजम्स लाइक एम्यूबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ वन सेल. द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, those organisms which are made up of a single cell. तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं कौन कौन है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने एम्यूबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. तो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली वी हैव द हायर प्लांट्स, द एनिमल्स, द ह्यूमन बींग्स, they are made up of the millions of cells. For example, our body, the body of human beings, it is made up of the 3 trillion cells. How much? 3 trillion cells are the plants, the higher plants. तो वो जो numerous type of cells are present in the plants and the higher organisms, those are called multicellular organisms, or the organisms which are made up of more than one cell are multicellular organisms. Okay, all living. तो दिस वॉज अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो द सेल, व्हाट डज दिस मीन? द सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आवर बॉडी, दैट मीन्स द लिविंग क्रिएचर्स फ्रॉम एम्यूबा अप टू द ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, small units called the cells. Now we shall proceed with the cell theory. What does cell theory states? Cell theory was actually, it was proposed by the Schilden and Schwann, the two scientists Schilden and Schwann in 1833. They gave the concept that all living organisms are composed of cells. Schilden and the Schwann, they gave the concept of cell theory that all living creatures are made up of cells. दिस सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रीन, ये जो सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रीन भी कहते हैं इसको, इट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855. इसी सेल थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया किसने? रुडोल्फ विर्चो इन 1855. चलिए देखते हैं बच्चों उसने क्या मॉडिफिकेशन लाई इस सेल थ्योरी में. अब सेल थ्योरी में कौन सी मॉडिफिकेशन इसने लाई? ओके, तो ये जो रुडोल्फ विर्चो कहता है कि पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, all cells exist from pre-existing cells. Means कि जो भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, जब हम माँ की कोख में होते हैं या वी आर इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तो हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड. ओके, तो उस जाइगोट से फिर हम कंप्लीटली एक फीटस में बनते हैं और कंप्लीटली एक ह्यूमन बीइंग में फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ठीक, मीन्स कि पहले हम सिंगल सेल्ड थे. अब अगर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो वो मिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है. तो दैट मीन्स all these living organisms are composed of cells. All cells exist from pre-existing cells. जो भी हमारी बॉडी में जो भी सेल, ये कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज जाइगोट से हम बने. ठीक है, तो ऑल द सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. नंबर सेकेंड,
Number second, this pre-existing cell, that means omnicelluli cellula, which means all cells exist from pre-existing cells, omnicelluli cellula. Second thing, all living organisms are composed of cells. जो भी कोई living creature है on this planet, okay, are composed of the cells. ठीक. Number third, genetic information is stored in the DNA. Okay, see the structure of the cell. This is the structure of the cell. We have here the nucleus, the control tower of the cell. Okay, this nucleus is called the control tower of the cell. In this nucleus, the DNA is there. Okay, DNA is the genetic material, deoxyribonucleic acid, and RNA is there. Both RNA and DNA are the genetic material, okay, which transforms the information from parents to the offsprings. थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस में होती है, डीएनए के सेल के न्यूक्लियस में होता है. डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है. नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज लाइक दैट. ओके, वी हैव द लाइसोसोम्स हियर, the cytoplasm, the living component of the cell, this is the cytoplasm, and we have the another organelle, that is the mitochondria. It's called the mitochondria, the powerhouse of the cell. Here is the endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum, it is the extension of the nuclear envelope is called the endoplasmic reticulum. We have here the Golgi bodies, the nucleus is there, the cell membrane is there. Okay, the cell membrane is there. This is the structure of the cell. This is the structure of the cell. Now चलो हम बच्चों और कुछ जानेंगे सेल के बारे में. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल. द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. मोर टू नो. किसने पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियस को? द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, द कंट्रोल टावर ऑफ द सेल, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831. Discovered the nucleus of a cell. Okay. J.E. Purkinje, the another scientist, used the term protoplasm. उसने coin किया term protoplasm, a living substance present inside the cell. This is the protoplasm, the jelly-like substance in which the organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, in which these organelles float, the jelly-like substance. Okay, the colorless substance. The living component of a cell is called the protoplasm. किसने दिया था पहले प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट? J.E. Purkinje. Okay. Now the cell. What does the cell theory states? That all living beings are composed of the cells. Means जो भी कोई living creature है इस दुनिया पे, ये किसका बना है? It is composed of cells. Okay. Now virus is the only exception to the cell theory. Let us talk about the virus. What is virus? बच्चों आपको पता है अभी जो whole this globe was engulfed by the coronavirus. Okay, let us talk a bit about the virus. Virus is a dead entity. It is a dead entity when it is outside the host. Okay, for example, जब ये host के body से बाहर होता है, for example we are the host. जब वायरस अटैक करता है ह्यूमन बींग्स पे तो होस्ट कौन बनता है? ह्यूमंस. अगर ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो होस्ट कौन बनेगा इसका? बैक्टीरिया. ठीक है. इवन बैक्टीरिया पे भी वायरस अटैक करता है. दोज वायरसेस आर नोन एज बैक्टीरियोफाज वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरसेस. यू कैन कॉल देम बैक्टीरियोफेज वायरसेस. ठीक. तो वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. Viruses are exceptions to the cell theory. How? Because when viruses are outside the host, they are dead. When they enter into the host, they becomes live, they becomes activated, and they control the genetic material of the cell. So on the one hand, the cell theory states that all living organisms are composed of cells, living organisms. But according to definition of viruses are dead. तो इसने कहाँ accept की फिर cell theory? It is the exception to the cell theory. Okay. Now I'll give the example of some cells. Okay. For example, we have the cell in the muscles, smooth muscle cell. This is the structure of the smooth muscle cell. The cells of the blood are RBC, red blood cell. This is the structure of the red blood cell. The OM cell. Okay.
This is the structure of Ohm cell, and this is the structure of bone cell. These are the structures of different cells. Okay, this is the basic and ultra structure of the cell. Okay, now let us talk about the difference between the plant cell and animal cell. Okay, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम जानेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, अगर हम देखेंगे पहले प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. क्या होता है? से सी we have the structure of this cell. This is called a cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. This cell membrane or plasma membrane, it provides structure to the cell, number one. Number two, it prevents the cell from the external injury or mechanical injury. This cell, the transport of nutrients occurs across the plasma membrane or the cell membrane. This is the function, these are the functions of the cell membrane. Okay, the animal cell possesses cell membrane. Okay, this cell membrane is selectively permeable and semi-permeable or semi-permeable. But when we talk about the plant cell, the plants, instead of the plasma membrane, contains another layer called the cell wall. Okay, called the cell wall. The only difference that distinguishes the plant cell from the animal cell is the plant cell contains the cell wall. Okay, got it? Second thing, the nucleus in plants, the nucleus usually lie near periphery. For example, I will give the example here. The nucleus in the plants usually lie in the periphery, means it is present near the plasma membrane, But in case of animals, we generally have the nucleus at the center. Nucleus usually lie in the periphery in case of plants, nucleus present near the center in case of animals. In plant cells, lysosomes are present in the less number. In case of the animal cell, the lysosomes are present in the more number. Okay, this is the difference between the plant cell and the animal cell. Okay, this was all about the cell. Okay, now we shall discuss all these organelles in coming lectures. For example, we have the organelles like cytoplasm, these lysosomes, cell membrane, nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and we'll talk about these things in coming lectures. Okay, and thanks.